So first of all, guys, I welcome you all. You are batch 8. You guys are batch 8. So guys, don't forget this. आपका जो batch है वो batch 8 है. और इस बैच 8 में और भी बहुत लोग ज्वाइन करेंगे. आई नो कि बहुत लोग हैं जो आज की मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग ज्वाइन करेंगे क्लास को इन फ्यूचर. So guys, you guys are batch 8. So we are going to learn spoken English. Spoken English means अगर आप लोगों में कोई भी है जिसको इंग्लिश बोलते वक्त लगता है कि माई इंग्लिश इज नॉट करेक्ट, मेरी इंग्लिश करेक्ट नहीं है, हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस, हाउ टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, हम करेक्टली इंग्लिश कैसे बोले, तो उनके लिए है स्पोकन इंग्लिश. प्लीज गाइस, स्पोकन इंग्लिश में हम लोग ग्रामर सीखेंगे. ग्रामर, वी विल लर्न ग्रामर. Okay, because we all know that grammar is very important. If we know grammar, then we can make sorry, we can make correct sentence. So अगर आप लोगों जो भी आज यहाँ पे इस सेशन को देख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि while speaking जब आप बात करते हो आपको समझ में नहीं आता कि are you making correct sentence or incorrect sentence, then spoken English should be your choice, जहाँ पे आप ग्रामर सीखोगे. Then we have fluency development. Fluency means the more we talk, the more we become fluent. जितना हम लोग बात करेंगे उतना हम लोग fluent होंगे. ठीक है? Public speaking, मैं आपको ऑडियंस दूंगा और ऑडियंस के सामने आपको बोलना पड़ेगा. You have to speak in front of an audience. बहुत लोग रहेंगे और आपको बोलना पड़ेगा. आप बोल नहीं पाओगे, रो दोगे, प्रॉब्लम होगा, बट you will still try, you will try hard, you will try hard, you will try hard, and after some day you will feel you are confident. लाइफ में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते. We can do anything. अगर आज हम लोग इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं, so there must be a reason. हम लोग इस रीजन पे बात करेंगे कि why we are not good in English. Guys, we will also talk about personality development. Personality development means how to organize my personality. You know, there are many people, आप लोग में बहुत लोग ऐसे हैं जो डरे हुए हैं. There are some people, they are scared. They feel nervous. They are very negative. My God, I can't speak in English. So we'll work on your total personality. Okay? So जो ट्रेनिंग होगा ना, that will be overall training. The training will be overall development. आपकी पूरी development, आपका how do you speak, how do you look, how do you talk, how do you speak in front of the audience, आप सब लोगों के सामने कैसे बात करते हो. We'll talk about everything in the class. Also guys, power vocabulary. आप लोगों में बहुत जन है जिनके vocabulary कमजोर है. There are many people out of you whose vocabulary is not strong. You don't have more words. आपके पास words नहीं है. So in vocabulary classes we will learn how to improve my vocabulary, how to have more words. So guys, we will talk about spoken English, जिसमें हम लोग grammar सीखेंगे. Fluency development, जिसमें हम लोग सीखेंगे how to speak fluently. Public speaking, जिसमें हम लोग सीखेंगे how to speak in front of the people, लोगों के सामने कैसे बोले. Personality development, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे how to feel positive always. Power vocabulary, हम लोग सीखेंगे नए words. We will learn new words so that while we speak much better. Those who are new, I would like to tell you that our organization name is IDQ Value Adder Academy. We are from 1975.
1975 से we are rendering training. Just so you can see one of your trainer, आपके जो एक trainer रहेंगे वो है Mr. K.K. Mandal. He is double national award winner. So यहाँ पे आपको जो train करेंगे, he will be expert. और Mr. K.K. Mandal के साथ मैं आपको train करूंगा. I've already showed you this video also. So guys, till now I have told you about my organization. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी कौन कौन से ट्रेनर हैं. मिस्टर के मंडल जो डबल नेशनल अवार्ड विनर है. इवन आई एम आल्सो ट्रेनिंग एंड आई एम गिविंग ट्रेनिंग इन पैन इंडिया बेसिस एंड दिस इज फ्रॉम आवर पार्ट. अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को देखूंगा. सो मैं आपको बोलूंगा कि यू हैव अ चैट ऑप्शन. आपके पास चैट ऑप्शन है. सो आप लोगों में किसी को भी अगर कुछ पूछना हो, इफ यू रियली वांट टू आस्क समथिंग, तो यू जस्ट पुट योर, आप चैट ऑप्शन में जाके बोलिए कि आई वांट टू आस्क, देन आई विल कॉल यू. ऐसे लोग बहुत कम है तो मैं एक एक करके भी बात कर सकता हूँ. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. गाइस यहाँ पे कुछ लोग हैं, ज्योति दोषी, परेश, वेनकान्ना एंड डिम्पल जी. मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि इफ इट इज पॉसिबल, अगर आपके लिए पॉसिबल है, देन यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो सो दैट वी कैन कम्युनिकेट, हम लोग बात कर सकें. कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट क्लास को इफेक्टिव करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you should switch on your video. It is not mandatory, but it is important for you. Okay, so now I'll handle your questions. So we have Sachin with us. Okay, let's ask from Sachin. Sachin, you have any question? If you have any question, you can ask. Sachin, please unmute yourself. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा जब आप बात करोगे, तो अनम्यूट करके बात करोगे. आपके वहां पे अनम्यूट का ऑप्शन है, सो दैट मैं आपको सुन सकूं. Yeah, good morning. So, suppose there is one thing, the problem I am facing, that one is the communication, second is the person, like we are the Indians, so the way you communicate that we can understand, but sometimes we need to communicate with the client like US or UK. So US people's English also understandable, but the UK people, the way they speak, I can't understand. Like they speak in a, like phonetics they use or verbs they use, we cannot understand. So this is also one problem that I am facing. Paresh, why we don't understand them? The main reason why we don't, there are two reasons. First of all, the words. Yeah. The words they use. The words they use are different. The way we use words and the way they use words, there are difference. So you have to understand few things, that their vocabulary is totally different. So first, you have to work on your vocabulary. And when you want to work on your vocabulary, you have to work on your phonetics, how you sound, how you speak. आपकी vocabulary कैसी है, आपकी pronunciation कैसी है, everything matters. How you speak and the new words. So when you will join our vocabulary classes, you will see, you will learn many new words. And when you will learn new words and then you will talk to them, you will find more easy to communicate with them. See, there are, as I said, two things: the pronunciation, how do you pronounce any word, and
how many words you know. These both are very important. So you have to work on your vocabulary and pronunciation, and we'll work on that. We'll work on that. Yes. Is there? I got one question from Sachin. Sachin said, "I want to, speak fluently." So if you want to speak fluently, you have to attend all the classes. Guys, you will be getting 3 classes per week. You will be getting 3 classes per week. आप सबको 3 क्लास मिलेंगे पर वीक में. या तो आप डिसाइड करोगे, मैं आपको कॉम्बिनेशन दे रहा हूं, व्हाट शुड बी योर कॉम्बिनेशन. ईदर यू चूज स्पोकन इंग्लिश, public speaking, and personality development. So guys, this is one combination: spoken English, public speaking, and personality development. This is your one combination. The second combination is vocabulary, then public speaking, and personality development. So guys, there are 2 combination. या तो आप ग्रामर सीखोगे, या तो आप अपने वोकैबुलरी पे काम करोगे. दोनों अलग चीज है, क्योंकि अगर आप ग्रामर कर रहे हो, इसका मतलब है कि you know that your English is not that great and you want to improve your English. आप अपने English को better करना चाहते हो. आप you want to know how to construct a sentence. आपको जानना है कि कैसे मैं English को correctly बोलूं. तो ये आपके दिमाग में अगर चल रहा है तो spoken English आपका choice होना चाहिए, जहां पे आप ग्रामर सीखोगे. अगर आपको लग रहा है कि your English is good, if you feel that your English is good, okay, if you feel your English is good, you just want to learn some new words, learn some better pronunciation, then you have to take vocabulary. So आप vocabulary या grammar दोनों एक साथ choose नहीं कर सकते. Either you have to choose vocabulary or you have to choose grammar. You will be getting 3 classes per week. 3 classes per week. Grammar, sir. Yes. English speaking grammar, sir. Manoj Patil. हाँ sir. Okay. So मनोज जी, आपके लिए एक ही चीज है, आप ग्रामर सीखोगे. ग्रामर, पब्लिक स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. आपका जो क्लास होगा वो ग्रामर में होगा, पब्लिक स्पीकिंग होगा और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा. और मैं इस क्लास के बाद आपका जो शेड्यूल होगा वो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा. ऑलरेडी शेड्यूल है लिखा हुआ, आपके व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में आपका शेड्यूल दिया हुआ है. फिर भी मैं आपको व्हाट्सएप रिवाइज कर देंगे. क्लासेस I will give you all the classes details after this meeting. मैं सबको वो क्लास के डिटेल्स भेज दूंगा. Yes. Is there any more question? To learn spoken English and personality development, sir. Okay, so public speaking also, right? Yes, sir. Yeah. So your combination will be grammar. Spoken English means grammar. Okay. Spoken English means grammar. Then public speaking, how to speak in front of public, and personality development. These 3 will be your area. Yes, sir. Okay. So I will, and guys, I will be sending you the schedule. I will be sending you the schedule. After this meeting, I'll be sending you the schedule. Yes. Yes. Any more question? Hi, Hi, I'm Dimple. Hi.
Good morning, first of all, everyone. My name is Dimple, and I belong to Gandhinagar, Gujarat, and I'm working in Bank of Baroda training department as a trainer. Right now, I'm promoted, so Okay. I want to not fluent English, speak in English. Okay. Dimple, Dimple, your voice, Dimple, your voice is breaking somehow. You know, I'm not able to listen everything. Okay, but Dimple, I got you. You are a trainer in one of the, bank in India. So that's a wonderful thing. That's really Bank, a very good thing. Bank of Baroda, Bank of Yeah, Baroda bank. BPO center. I'm working. Yeah. Okay, okay. That's wonderful. So you want to be more fluent, you want to be a better communicator, right, Dimple? Right, Absolutely. exactly. So, see, Dimple, now you have to choose one thing, whether you will go for grammar or you will go for vocabulary. You have to decide. If you feel that your English is good, you are making correct sentence, then don't go for grammar. Then go for vocabulary. Not for correct. I'm not able to speak correctly English. My Okay, grammar is not good, I think so. But I'm just speaking little bit, not that's fluent. fine. That's fine, Dimple. So I can understand your problem. So, Dimple, do one thing. You choose grammar, public speaking, and personality development. okay, no issue. Okay, Okay, thank you for I suggestion. think that will be better. Okay, now listen, everyone, listen. I will be sending you all the schedule of the classes. You have to see. अगर आप मुझसे पूछोगे तो I'll be telling you the schedule right now. I'm telling you the schedule right now. Please आप कहीं पे भी हो ये schedule को लिख लो. Please write down your schedule and Yeah. आपका क्लास के कुछ घंटे पहले या कुछ मिनट पहले आपके पास क्लास का लिंक चला जाएगा आपके ग्रुप में. तो आपका अगर क्लास है तो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप क्लास में आ जाओगे, जैसे आज आप लोग यहाँ पे आए. ठीक है, एक और चीज मैं SK, बता one रहा हूँ. more question. या डिम्पल, What is the timing? Because my office timing is 10 to 7. डिम्पल, That's I'm speaking. and some I'm going to tell you about the timing and all. I'm going to okay, tell you. okay. मैं अभी बता रहा हूँ सबको टाइमिंग. उस टाइमिंग में अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो उस पे भी हम लोग बात करेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. Okay. ओके, सो गाइस, I'm sharing you आपका चैट ऑप्शन जो है, चैट ऑप्शन को अच्छे से देखिए. मैं वहां पे जो अभी जो टाइमिंग है मैं उस पे बात कर रहा हूँ. पब्लिक स्पीकिंग. Public speaking will happen on Saturday, 12 p.m. This is the timing. Saturday, 12 p.m. is the timing for public speaking. Saturday, 12 p.m. is the timing for public speaking. Is it okay for everyone? Please, आप लोग किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे अभी भी बताएं. Public speaking, Saturday, 12 p.m. Okay, this is one of the timing. Now I'm telling you the personality development. Personality development. Wednesday, 7 p.m. Personality development, Wednesday, 7 p.m. Now vocabulary. If you guys want vocabulary, then it will be Monday, 7:30 p.m.
Monday 7:30 p.m. So guys अच्छे से देख सारे टाइमिंग्स को आप लोग देख लीजिए. Now the grammar. Just a minute. Vocabulary का जो timing है, I'm sending you the timing again. Yes. Vocabulary timing is Monday 7:30 p.m. Now the most important, that is called grammar. Grammar, the timing of grammar will be, now you have to manage this timing very well. We have grammar on Monday 6 p.m. Is this schedule suiting everyone? First of all, you need to tell me. Public speaking Saturday 12, personality development Wednesday 7 p.m. Vocabulary Monday 7:30. Vocabulary 7:30, and we have grammar. Did I not write grammar here? Yes, grammar Monday 6 p.m. Is it fine for everyone? Sir, Yeah. I have one question. Yeah, Jyoti. This time 6 p.m. grammar and other time vocabulary 7:30. Yeah. It's messy, na? So you are not taking both, no? Either you are taking grammar or you are taking vocabulary. Okay, I will take grammar. Whatever you take, that is your decision. Okay, sir. Okay. Okay. Please, I told everyone, guys, 3 classes per week. 3 classes per week. 3 classes per week. Yeah. Spoken English, public speaking, and personality development, or vocabulary, public speaking, and personality development. Yes, now I really want the classes schedules are okay for you or not. Yes, sir. Okay. Jyoti is saying okay. So Jyoti ji, aap write down somewhere in your copy, and so that you don't miss out. I wrote. Yeah. Thank you, sir. Yeah, thank you very much. Yes, is there any more question? Yeah, Dimple ji, will you be able to manage? Yeah. I not able to attending the public speaking Saturday 12 p.m. because my office time. Other is no issue, but only public speaking Saturday 12 p.m. is I'm not comfortable timing because Okay, after Dimple ji. Yeah. I'm giving you one time to use. Kindly check. मैंने आपको personal chat पे आपको timing दिया है. ये time ठीक है आपके लिए? Yes. 8 p.m. is perfect. Fine. Yeah. Then that No will issue. be your public speaking time. Okay, no issue. Okay, so Dimple, that will be your Fine. public speaking time. Okay, is there any person Okay, having any good. Thank problem? you. Okay, so we have alternative options, but सबको हमेशा option दूंगा तो फिर मेरे पास option बचेगा नहीं. So I really don't want to give options. जो option मैंने दिया है, अगर आपको लग रहा है कि you can manage, so settle with that, or else I can think about you if you really need it. Sachin, if the schedules are okay, then you can show your thumbs up so that I can understand. Schedule is okay, sir, but personality, public speaking is not.
What happened? Public speaking? The Saturday 12 p.m. It is not possible, sir. That time. Okay. Can you change that also? The all are after 7:30. Is it fine, Shrikant? I have messaged you. Is this time perfect for you? Yeah, okay, sir. That is it. Okay. Sir, grammar also Monday 6 p.m. Ah, This is also grammar. this is also a problem. Yeah, sir. Grammar is Monday 6 p.m. That is, it is also not compatible time, sir. It's weekly, one day. Can't you manage it? One day, weekly, one day. Can't you manage it, Shrikant? Okay, sir. Okay, I will manage. But if any work is there, but the time it is Okay. not possible. Now I'm telling you. Now I'm telling very important message to everyone. All the grammar classes are recorded. All the grammar classes are recorded. So if anyone misses it, you will get to see the video so that आपको पता लगे कि what happened in the class. Will it be fine, guys? Yes, sir. It's fine. All the grammar Yeah. classes will be recorded. सारे grammar class, सिर्फ grammar class. बाद में दूसरा class मत मानना. सिर्फ grammar class क्योंकि grammar classes are very important. So if somebody is missing grammar class, then you will be getting the recording of the grammar class on that particular day night so that you can understand. You don't miss out the class. So guys, nobody is going to miss out the class. It is my responsibility. I have time. I have everything so that you can get all the classes. हाँ, अब बात है आप कितने serious हो, how much serious you are, that is important. That is important. Yes, any more question? So guys, yeah, Srikant, tell me again. So how many days will I learn, sir? Yes. There will be 1 month weekly 3 classes. So how many? 12 classes. You Okay. will be getting total 12 classes here. Okay. Total 12 classes you will be getting here. Classes are starting from Monday. Classes are starting from Monday. So whoever has taken grammar, they should log in by 6. I'll be sending you the link. And whoever is starting with the vocabulary, they will logging in 7:30. So classes are coming, starting on Monday, 6 p.m. Any question? First class you start with grammar, sir. First class, we are starting with grammar. Absolutely grammar, 6 o'clock this coming Monday. Okay, sir. Don't worry, if you miss the class, then you will get the recording. Okay, sir. Yeah. Any more question, guys? Then you please tell me right now. Okay. Now, very important thing I'm telling you. Please, guys, listen me very carefully. This is very important message that information I'm going to tell you. Please listen. Today is Saturday. Tomorrow is Sunday. We are starting classes from Monday. Before joining Monday grammar class, I will be giving you 2 video links. Video link number 1, video link number 2. Before you sit for the Monday session, you should see that video. Today you see one video, next day you see one video, so that from Monday
वी कैन स्टार्ट। मैं इसको हिंदी में भी बोल रहा हूं। मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है ग्रामर की, लेकिन मैं आज आप लोगों को एक वीडियो लिंक दूंगा, आज दूंगा और कल भी दूंगा। मंडे को क्लास में बैठने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। You should see that video एकदम without missing that video. Is it fine? Are you guys understanding? Show your thumbs up so that I can understand that yes, you are understanding. Absolutely, very good. Don't miss out any class. All the classes are very important. Guys, classes आपके लिए free हैं, but I am taking it very very seriously. So ये मत समझना कि क्लास फ्री है तो क्लास में कुछ होगा नहीं। आपको मेरे बॉडी लैंग्वेज से कहीं पे भी लगना नहीं चाहिए कि मैं फ्री क्लास की बात कर रहा हूँ। ऑल्दो ये आपके लिए फ्री है, बट क्लासेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी जो ये मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग भी रिकॉर्डेड हो रही है। ये मीटिंग भी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगी, क्योंकि बहुत लोग नहीं ज्वाइन कर पाए आज। सो डोंट वरी, आप भी इस वीडियो को देख सकते हो, सो दैट अगर कुछ मिस कर जाओगे तो आपको भी पता चल जाएगा। सो गाइज, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप स्पोकन इंग्लिश में ज्वाइन कर रहे हो या तो वोकैबुलरी में ज्वाइन कर रहे हो। अगर स्पोकन इंग्लिश में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ग्रामर मिलेगा, पब्लिक स्पीकिंग मिलेगा और पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलेगा। If you are joining in vocabulary, then you are not getting grammar. You are getting vocabulary, personality development and public speaking. I believe क्लास में जब बैठोगे तो कॉपी एंड पेन साथ में लेके बैठोगे, because you are serious and you want to learn. और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी क्लास होगा क्लासेस के पहले ही आपको लिंक मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, आपका क्लासेस का टाइम आपके दिमाग में ऑलरेडी है। क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ही यू विल गेट द लिंक। बाय चांस अगर मैं लिंक देना भूल गया, बाय चांस इफ आई फॉरगेट टू गिव यू द लिंक, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, समटाइम्स आई मिस आउट। सो जो लिंक मैंने पहले भेजा था ना, लिंक एक ही रहेगा, एक ही लिंक रहेगा। ये वाली लिंक नहीं जो आज आप पा रहे हो, क्लासेस का लिंक अलग होगा, लेकिन सारे क्लासेस के एक ही लिंक होंगे। तो कभी अगर मैं बाय चांस आपको लिंक देना भूल भी गया तो आप पुराने लिंक पे भी जाओगे तो यू कैन ज्वाइन द क्लास। अगर मैं भूल गया, नॉर्मली मैं नहीं भूलता हूँ, बट ये मैं आपके प्रिकॉशन के लिए बोल रहा हूँ, सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी क्लास। Guys, thank you very much for joining. Be serious about the class because I am very serious about this. We are starting. हम लोग start कर रहे हैं मंडे से। Monday 6 PM is the grammar class. Don't miss any class. बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग serious बोलते हैं, लेकिन ना जब class start होता है फिर उनका seriousness चला जाता है। So I believe कि ये आपके साथ नहीं होगा। You are really very serious. Okay? So आज जो मैंने बोला वो याद रखना। जो क्लासेस के वीडियोस मैं भेजूंगा, एक होगा वीडियो लिंक नंबर 1 और वीडियो लिंक नंबर 2। आज सैटरडे है, कल संडे है, ये 2 लिंक जो है उसको देख लीजिएगा। एक लिंक अप्रॉक्स 1 घंटे का एक वीडियो होगा नॉर्मली। तो कभी भी टाइम मिले, आज एंड कल दोनों में प्लीज देख लीजिएगा। और क्लासेस के टाइम अगर आप अपना वीडियो ऑन रखोगे, इफ यू कीप योर वीडियो ऑन, इट विल बी बेटर। ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास अगर इफ देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो आई कांट डू एनीथिंग, बट आई एम टेलिंग यू ड्यूरिंग क्लास अगर आपकी वीडियोस ऑन रहेंगी तो इट विल बी much better. So मुझे भी बात करने में better लगेगा, right? I can see you, I can talk to you. This is the only conditions. So guys, thank you very much. Our first class will be from this coming Monday 6 PM.
grammar class. Don't miss this class. This class is very, very, very important. Okay, guys, if you have any question, then you can ask. Otherwise, we are done for the day. We are starting our classes from coming Monday. Classes miss मत करना, यही मैं बोलूँगा. क्या होता है ना कि जब क्लासेस फ्री होती है ना तो हमें लगता है कि यार फ्री है, मिस करने से चल जाएगा. मैं आपको ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये होता है लोगों के साथ. चांसेस बहुत ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है कि ये आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोगों के साथ ये नहीं होगा. ऑल द बेस्ट टू यू. Thank you. थैंक यू माय डियर Okay. फ्रेंड्स. Thank you. बाय बाय. बाय बाय. Bye bye. मीटिंग ऑन मंडे. वीडियोस देखना मत भूलिएगा. चलिए बाय. थैंक यू वेरी मच. Bye bye.